Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and I hope all of you are doing really good today. Am I clearly visible and audible to everyone? Good evening. Good evening. Can you hear and see me clearly, everyone? Good evening. Hi, Ashmita. Can you hear and see me clearly? Good evening, Mobis. I'm absolutely good, everyone. Thank you so much for asking. I hope I'm clearly visible and audible. Dreamer Achiever, Shivangi. Hi, everyone. Okay, so I believe I'm clearly visible and audible to everybody. And so today's session aims at telling you a few things that if you keep those things in your mind, you're very likely to score really good in critical reasoning. And if you don't do them, the things that I share with you, you're going to get critical reasoning wrong. You might be hating critical reasoning. So I'll be sharing some pointers with you that could actually work like a cheat sheet for you to get critical reasoning correct. All right. So before we start discussion, and then after the discussion that we do, I'll give you some, different kinds of questions. I'll give you some assumption questions, some argument questions, some strengthening or weakening, some confusion questions, and we'll be doing some practice as well along with that. But before we start doing any of this, let me take you through a few things. If you are targeting CLAT 22, that's going to happen in May, our second batch for the crash course has been launched. So, since you don't have a lot of time left for CLAT 22, I'd expect you to enroll yourself for this batch at the earliest. If you're targeting CLAT 23, then batch 8 for the foundation module has been launched where I'll be teaching English. Not critical reasoning, but English. क्योंकि केडी सर ने हाईजैक कर लिया मेरा critical reasoning इस क्लास में, तो केडी सर critical reasoning पढ़ाएंगे. I'll be teaching English here. Nonetheless, best of the industry, look no further, जल्दी से enroll कर लो. And we have started with the fantastic Feb Fiesta. So you just have to spin the wheel and you could win multiple prizes. Make sure you participate in this and don't be late. Also, if you're targeting MHCT, ALET, SLAT, BLET, JAMIA, these LLB colleges, then batch 2 for these colleges has been launched because their pattern is a little different from CLAT. So specifically aiming these examinations, batch 2 has been launched. Look no further. Jaldi se enroll kar lo. Good evening, everyone. Chaliye. Okay, that's good. Okay. All right. Okay. And last but not the least, if you wish to study only legal affairs and current events, then batch 2 for this booster course has been launched where Nivedita ma'am and Abhimanyu sir would be teaching you legal affairs and current events. If this is what you want to study and not other subjects, this batch is for you. Jaldi se enroll kar lo is batch ke liye. Alright, so few things. When you solve a critical reasoning question, be it a one-liner question or be it a paragraph-based question or be it a passage-based question, there are a few things that if you don't do them, you might actually be able to score much better or lesser depending upon your ability to understand these pointers. Let's start with our first pointer. First, since it is a reasoning based question, but you have a lot of data, a lot of people tend to use GK, or let me say they use a lot of extra knowledge. Extra knowledge means something that's not mentioned, but you assume it otherwise. And that will fetch you an incorrect score. So always remember, since it's a reasoning question, you should never use any information that's mentioned outside the data. Now let's understand two things here. Okay. The first thing is what is called as extra information and GK and what is not. क्योंकि कभी-कभी आपको लगता है मैम यहाँ तो GK यूज किया गया है, कभी-कभी आपको लगता है नहीं यहाँ तो GK यूज नहीं कर सकते, तो बाइफर्केशन कैसे करते हैं आप? पहला, अगर कोई वर्ड आपको दिया हुआ है, you need to know the meaning of the word. You need to know the definition the word has. So for example, if I say a socialistic pattern of society, you need to know what kind of society is a socialistic one. When I say a democratic pattern of election, you need to know what is a democratic pattern. But
You can't say which country follows socialistic and which country follows democratic pattern. That you can't use. So the meaning of a word is extremely important because that meaning of the word will help you with the inference based question, the implication based question. But जहां आप extra knowledge लगा देते हो कि ये इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, आप वो क्वेश्चन गलत कर सकते हो. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल टू सपोर्ट दिस एग्जांपल. सो इफ आई से इंडिया को भी पीस चाहिए और पाकिस्तान को भी पीस चाहिए, कैन आई कंक्लूड इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी फाइट नहीं हो सकती है? कैन आई से दैट? यस और नो? इंडिया नीड्स पीस, पाकिस्तान नीड्स पीस. कैन आई से both the countries will not have a fight together? Yes or no? Yes or no? Quickly. Nobody? No, 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 of course not. Because our definition of peace and Pakistan's definition of peace would be different. Yes? हमारे लिए पीस है, पीओके हमको चाहिए. पाकिस्तान के लिए पीस है, पीओके नहीं देंगे. सबकी पीस की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. तो आप जीके नहीं लगा सकते हो यहाँ की वॉर होगा या नहीं होगा. हाय पुष्कर, please catch up with what we are studying, okay? So never use extra knowledge beyond what is mentioned to you in the passage. That's the first thing that you need to learn. What's the second thing that we need to remember if we aim at getting critical reasoning correct? Never assume things which are not mentioned. जो चीज नहीं लिखी है आप अपने मन से वो नहीं मान सकते हो. ये दोनों पॉइंट लिंक्ड होते हैं. तो अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है, if something is not mentioned, assumption वही होगा जो इनडायरेक्टली लिखा हुआ होगा. इनडायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, आप उसको नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है कि रशिया विल अटैक यूक्रेन, कैन आई से रशिया इज नोटोरियस? यस और नो? कैन आई से दैट रशिया विल अटैक यूक्रेन? कैन आई से रशिया इज नोटोरियस? अटैक करेगा तो नोटोरियस तो होगा ना. सोच के बताना आंसर क्या होगा. Russia will attack Ukraine. Can I say Russia is notorious? Yes, can you say that? No? Why not, Diya? Attack कर रहा तो notorious तो होगा. No, you can't say that because you don't know the reason for attacking. You can't use your GK. You can't assume things otherwise with that are not mentioned. If the author says Russia is notorious, thus Russia is attacking Ukraine, then you believe into the fact that it is notorious. But you, with your own point of view, can't believe into that fact. So never assume things which are not mentioned. Please don't go beyond what is implicit in the passage. That's point number 2. Point number 3. Never be confused with the main argument of the question. This by far, my children, is the most important thing to master critical reasoning. One-liner question, paragraph-based questions, passage-based questions, कैसा भी question हो. ऑथर बोलना क्या चाहता है? ऑथर ने ये पूरा पैराग्राफ क्यों लिखा है? Why has this whole passage been written? There is one point that he wants to put across, and everything else written in the passage as a premise will be written to support that main argument only. You need to learn how to identify arguments. 2 things, remember. 1, whenever you started solving a question, never look at the question that is strengthening पूछ रहा है या weakening पूछ रहा है या inference. जब भूल जाओ, आपका सबसे पहला टारगेट ही ये होना चाहिए कि मुझे डूड ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया आपकी 90% बैटल वही विक्ट्री हो जाती है. ये क्या बोलना चाहता, ऑथर ने इतनी डेटा दी हुई होती है, इतनी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, लेकिन इस सब से वो बोलना क्या चाहता है अल्टीमेटली.
So exactly दिया, there could be other reasons as well. Ma'am, because सबकी अपनी side होती है, exactly. Okay, ma'am, from where I can practice CR questions? सृष्टि, can I answer that question by the end? कुछ question sample solve करते हैं, ठीक है? Assumption करेंगे, conclusion करेंगे, strengthening करेंगे, weakening करेंगे, inference करेंगे, कुछ 5-6 question solve करेंगे और फिर बताऊंगी कहाँ से solve करने हैं आपको critical reasoning और कैसे आपको अपना ग्राफ up की तरफ बढ़ाना है, ठीक है? Because एक generic answer हो सकता है कि GMAT guide solve कर लो, but starting off with the GMAT guide would not be a great idea. Okay, remember that. Because in ALET, you get one-liner questions which GMAT guide doesn't refer to. Okay, so I'm going to answer that question by the end. So, back to it. सबसे पहले आपको यही चीज समझनी है पैसेज में. ये समझ में आ गई अगर आपको, तो फिर स्ट्रेंथनिंग है या वीकनिंग है या इंफरेंस है या पैराडॉक्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली आएगा. तो जो लोगों के स्ट्रेंथनिंग गलत होते हैं या वीकनिंग गलत होते हैं, 90% ऑफ द टाइम्स वो इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट ही समझ में नहीं आता. आप प्रॉब्ली एक ऐसी लाइन पे वर्क कर रहे होते हो आर्ग्यूमेंट समझ के जो कि प्रीमाइस का पार्ट है. You guys know what a premise and an argument is, right? You guys know that? Who doesn't know it? Pushkar, I try to, but then I don't see you in my Hindu classes every day. I have that every day. I make critical reasoning questions in Hindu classes every day at 10 a.m. You guys know the difference between premise and argument? For somebody who does not know, quickly, a premise would be additional information in the paragraph. All of it would be written so that the author can draw the main argument. The argument is the main point he wants to make. To support that main point, he would give you a lot of information, explanation, data. That explanation, data, information will be a premise through which he'll make his main argument. आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी लाइन आर्ग्यूमेंट है. हर एक क्वेश्चन में, every single question you need to be able to identify what is the argument. Once you get that, trust me on this. Go slow initially. It will take time. But critical reasoning पहले टाइम देके एफिशिएंसी बढ़ाओगे तभी तो स्पीड बढ़ाओगे. एफिशिएंसी लो होगी तो स्पीड कैसे बढ़ेगी आपकी? तो इनिशियली स्पीड पे काम नहीं करना. इनिशियली अपनी एफिशिएंसी पे काम करो. समझो आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहता है. आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें कौन सा लाइन आर्ग्यूमेंट है. अगर आप कंफ्यूज हो तो आप गलत आंसर मार्क करोगे, ठीक है? Fourth, when you are careless about reading the information carefully, this pointer can be attached to point number 3. You are careless. आप randomly पढ़ रहे हो क्योंकि आपको जल्दी आंसर करना है. You don't have a time. You don't look at tiny information that's hidden, that's implicit. आपको पता है जब आप पैराडॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो without even reading the question कि पैराडॉक्स का क्वेश्चन है, if you read the question carefully you'll realize, oh, I can see a paradox here. If you read the passage carefully, do you understand what I'm trying to say? Yes? Okay, Tanya, good question. Are conclusions and main argument different things? So remember something. If you talk about inference can be drawn from one line, okay, which certainly cannot be your main argument, because main argument has to be drawn from the whole passage and not one line. 2, if you talk about conclusion, if the entire passage has been written to draw this conclusion, then this conclusion will be similar to your main argument. You just need to be careful about this fact. क्या ये पूरा पैसेज इसी को ड्रॉ करने के लिए लिखा है? क्या रिमेनिंग पैराग्राफ प्रीमाइस का पार्ट है? If that is true, this conclusion is my main argument. Just do this proof check and you'll find your correct answer about if conclusion is similar to the argument or not. Okay? All right? Okay, now back to it. If you are careless, आप जब पैराडॉक्स की क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप रैंडमली देखते हो, फिर देखते हो पैराडॉक्स का क्वेश्चन है, चलो फिर एक बार जाके देखते हैं पैराडॉक्स क्या है. टाइम वेस्ट करते हो ना इसे. अगर एक एक वर्ड केयरफुली पढ़ोगे, you would be able to infer things between the lines, you would be able to find the conclusion, you would be able to find the premise and thus the main argument as well. Never underestimate the difficulty level of a critical reasoning question. एक एक वर्ड को लिटरल नहीं देखना है,
उनमें लिंक क्या है हर एक सेंटेंस में, आपको एक फ्लो बनाना है इंफॉर्मेशन का. So that is exactly why RC becomes different from CR. They are different. Here, I can actually skim, read some parts, leave some parts, and go on. But with critical reasoning, I have to be very careful. I can skim certainly here with critical reasoning as well, but I can't read it carelessly because you don't have factual questions here. In CR, you can have factual questions in RCs. So careless reading will make you suffer. Remember that. Okay? So here are the four things you need to remember if you wish to score well in critical reasoning. Now let's do a bit of practice. Let's see if we can apply this knowledge to solving questions. Okay? I'll give you one argument question, one assumption, one conclusion, one strengthening, one weakening. Okay? Let's solve these questions and let's understand if you can apply this knowledge. Here is an assumption question. I would want you to answer how many assumptions would follow here. Quickly, everyone. Exactly, Dia. You're absolutely right. देखो ट्रासिक ये नॉर्मल होता है बट यू नो व्हाट टू ओवरकम दिस यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एम्पल थोड़ा डर तो क्रिटिकल से लगता है बट आई बी ऑनेस्ट इस कोई एक टाइम था जब मुझे भी लगता था बट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड यू गोइंग टू बी अ मास्टर ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हाट्स आवर आंसर हियर only two okay only two but then people who are marking only B if the tourism industry assumption में हम negation technique use करते हैं right. If the tourism industry did not play a major role in attracting foreign tourists, how will our number of tourists have a vigorous growth? ये तो एक नेसेसरी कंडीशन हो जाती है ना कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तभी तो हमारे नंबर ऑफ टूरिस्ट का एक विगरस ग्रोथ आया थोड़ा सा ग्रोथ आता मोमेंटरी ग्रोथ आता समझ में आता टूरिज्म इंडस्ट्री का ही तो ये काम है ना तो वन तो इंपॉर्टेंट हो गया तो आंसर बोथ तान्या निगेशन टेक्निक यूज करके देखा डज इट वर्क हियर नो the negation technique does not work here. Is tourism industry a necessary condition? Increase the number of tourists visiting my country. Can the number of tourists visiting in my country grow because of any other reason? Yes, Trasik, it can still have a vigorous growth without tourism industry playing a major role. Yes, maybe the place was in news exactly. Yes. Or maybe we are hosting Olympics. Or maybe a new architectural site was found. Or maybe we built the Statue of Unity and people wanted to come here and see our Statue of Unity. बिल्कुल है प्राइम बिल्कुल है आपके एग्जाम में भी तो आएंगे ये क्वेश्चंस आएंगे ना तो इसलिए वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकता है नेग्लिजिबल है मेरी कंट्री में फिर भी टूरिस्ट आना बढ़ सकता है और एक्सवाइज बांग्लादेश में टूरिस्ट जा रहे हैं कुछ नया दिख गया लोगों को हो सकता है बांग्लादेश की टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल नेग्लिजिबल है यस अफगानिस्तान हाँ सैडली नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ सकता था ओके वन इज रॉन्ग नाउ द सेकंड वन इज द अच्छा वन समझ में आया सबको जो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया वो क्लियर हुआ यस द सेकंड वन द नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया हैज इंक्रीज्ड अगर फॉरेन ट्रैवलर्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो विगरस ग्रोथ नहीं हो सकती है सो एक्चुअली टू इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ दीज टू वर्ड्स ओनली विगरस ग्रोथ का मतलब ही है कि वो ट्रैवलर्स बढ़ गए हैं सो इट्स अ रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन टू विल सर्टेनली फॉलो द आंसर इज ओनली एंड ओनली टू गॉट दैट पीपल okay let's move to the next question everyone conclusion let's see if you can get this
गुड रीजन के लिए भी उसमें होना चाहिए. दैट्स द पॉइंट. निहाल आया समझ में? ओके, बहुत क्यों नहीं होगा? ध्यान से करना है इसको. डोंट अज्यूम थिंग्स अदरवाइज नॉट मेंशन्ड. याद रखना ये पॉइंटर इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. Your answer. Both okay. उद्देश्य नीड्स इट बैडली का मतलब होता है कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसे वैक्सीनेशन, आवर कंट्री नीड्स द बूस्टर डोज बैडली, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है. ईदर ओके, टू, वन, सो मेनी आंसर. मैंने आपको एक पॉइंटर बताया था, डोंट अज्यूम थिंग्स अदरवाइज नॉट मेंशन्ड. ओके, और बहुत सारे लोगों ने वो चीज अज्यूम कर ली. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो. What does conclusion mean? Conclusion means if this is true, this should also be true. Okay? Automatic devices that save time make a new work culture. For example, मुझे पेन्स बनाने थे, हाथ से बनाते, इसमें कवर लगाते, मैनुअल काम होता, टाइम लगता. अगर एक ऑटोमेटिक मशीन है इसको बनाने के लिए, तो वो टाइम बचाएगी. And that is a new work culture. Okay? This culture removes inertia. मतलब inertia मतलब laziness. क्योंकि ये बहुत स्पीड पे काम करेगी तो ये लेजीनेस रिमूव कर देगी, और इंडिया को इसकी बहुत जरूरत है. तो मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया, शासिक ध्यान से सुनना. When I give you the example of booster doses, when I say Indians need booster doses badly, does that mean इंडिया में बूस्टर डोजेस है ही नहीं? या फिर ये भी मीनिंग हो सकता है कि इंडिया में बूस्टर डोजेस कम हैं. Do you want to change your answer here? Do you want to change your answer? Do you still think two will follow? Yes? No? Two will not follow. Two is wrong. हो सकता है इंडिया में मशीन्स तो हैं, बट चाहिए 10 और 2 ही हैं. बूस्टर डोजेस चाहिए 10 करोड़, है सिर्फ 100. तो इंडिया नीड्स इट बैडली, बूस्टर डोजेस. दैट डज नॉट मीन इंडिया में बूस्टर डोज है ही नहीं है, सिर्फ 100 है और 10 करोड़ चाहिए बूस्टर डोजेस. Yes? Don't assume things that are not otherwise mentioned. This is a wrong conclusion. अगर किसी तुम्हें बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, does not mean तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो सकता है कर रहे हो लेकिन कम कर रहे हो, और ज्यादा करने की जरूरत है. Yes? You need to study badly does not mean you're not studying. Thank you, lovely. Thank you, my child. ठीक है? Now one. Indians are very slow and slothful. इंडिया में ये कल्चर इनर्शिया रिमूव करेगा. तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे इंडियन स्लो एंड स्लॉथफुल हैं? हो सकता है 10 हैं स्लो एंड स्लॉथफुल आउट ऑफ 20. उन 10 में से इनर्शिया हटाने के लिए ये ऑटोमेटिक डिवाइस चाहिए. हाउ कैन यू से ऑल इंडियंस आर वेरी स्लो एंड स्लॉथफुल? रॉन्ग कंक्लूजन. द आंसर इज नीदर. Diya, you got that correct, my child. Yes, you got that correct.
Shivangi, you got this correct too. Trasik, you too. Yes, the answer is neither. Okay? Neither. Okay? Alright, चलिए. Let's move to the next question. Arguments. ध्यान से समझना क्या करना आपको. कौन सा आर्ग्यूमेंट दोनों में से स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक. कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है ये बताना आपको. दोनों में से पढ़ के बताओ. Both could also be strong. Neither could also be strong. You tell me which of them are strong. Okay? Yes, Tanya, that could also be true. Exactly. Good evening, Power Code. Solve this question. Please don't take the question personally, anyone. Don't use GK. Remember that. Both are weak. Classic GK लगाया है. उद्देश्य GK लगा दिया. Personally ले लिया. Neither. One. Okay. All those people who are saying neither, एक बात बताओ. जिसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होता है और रीजनिंग अच्छी होती है, तो आईक्यू हायर होता है. अगर आईक्यू हायर है तो ऑटोमेटिकली वो स्मार्टर हुआ ना. वो तो फॉलो करना चाहिए ना. आर्ग्यू करो मुझसे, मुझे बताओ तू क्यों गलत कर दिया. आपको बोलना है स्मार्टर है कि नहीं. आप आर्ग्यूमेंट देते हो हाँ स्मार्टर है क्योंकि उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेटर होता है. अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेटर होता है तो उसका आईक्यू भी हायर होगा. आईक्यू हायर होने से स्मार्टर बन ही जाता है ना. आईक्यू तो स्मार्टनेस ही दिखाती है आपकी. यू शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग देन. है ना. नो व्हाई. Only be. No, my children, the answer is neither. Neither. अच्छा देखो मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ जब तो आपको what am I trying to do here? You have to train your mind to think that way. कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. एग्जैक्टली स्मार्ट पढ़ाई में हो सकता है, आईक्यू में हो सकता है, ईक्यू में भी हो सकता है. वो एक सब्जेक्ट किस पर्सन को स्मार्ट बनाता है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. अब अगर एक इंजीनियर चाहिए मुझे तो मैं आईआईटी से लूंगी. अगर मुझे लॉयर चाहिए, स्मार्ट लॉयर चाहिए तो मैं एनएलयू से लूंगी, एनएलयू दिल्ली से लूंगी, एनएलएस से लूंगी. सो द स्मार्टनेस इज अ रिलेटिव टर्म. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट दैट आई हैव. So, if I am comparing two things, IIT graduate smarter than NLU Delhi depends on what my requirement is. Lawyer चाहिए तो क्या IIT graduate hire करूंगी? नहीं करूंगी ना, क्योंकि मेरे लिए तो smarter NLU Delhi graduate है. Thus, the second one is absolutely weak. QT better होना आपको smart नहीं बनाता. This question should not hurt your ego. This first one, the number of students taking JEE is much higher than the number of students taking ALET. ठीक है. तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका स्मार्टनेस दिखाता है. उस हिसाब से तो आईआईटी ग्रेजुएट से ज्यादा स्मार्ट एसएससी कैंडिडेट्स होने चाहिए या फिर बैंकिंग का एग्जाम देने वाले लोग होना चाहिए, क्योंकि उनका नंबर तो और भी ज्यादा आईआईटी देने वालों से. अगर एक क्लर्क की भी पोजीशन निकलती है ना तो उसमें भी आईआईटी जितने लोग अप्लाई करते हैं तो वो स्मार्टर हो गया क्या उससे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने देते हैं एग्जाम वो कभी भी ये डिटरमाइन नहीं करता आप कितने स्मार्ट हो. हो सकता है एक्चुअलीज में कितने लोग एग्जाम देते हैं. स्मार्टनेस इज अ रिलेटिव टर्म. फर्स्ट इज आल्सो वीक. ठीक है. बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. गॉट दैट एवरीवन. ओके. सो another argument question. Which of how many of these are strong? Only one, only two, both, neither. Another argument question.
शेयर किया मेरा सेशन? शेयर किया? नहीं किया तो कर दो। समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो, नहीं आ रहा है तो क्या बात अलग है। क्वेश्चन आंसर करो। Both okay? Maybe one or neither, okay? Thank you, lovely. One. Okay. So let me explain the question. आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के. Okay? The trick is कि जो भी आर्गुमेंट में लिखा होता है ना, अगर वो बाय द सोसाइटी डिजायरेबल है, maximum number of people, if desire that argument, it would always be a strong argument. Will maximum number of people in the society desire standardization in the process of education, uniformity in the process of education? Yes or no? Answer that. If yes, if maximum number of people in the society want uniformity and standardization, which is a positive, स्टैंडर्डाइजेशन तो सबको चाहिए, इसका मतलब ये एक डिजायरेबल आर्ग्यूमेंट है. हर डिजायरेबल आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट माना जाता है. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग. ओके, यस, द वन इज स्ट्रॉन्ग. सेकंड वन, this system has been followed in many western countries like USA and it has been a success. अब यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, वो इसको फॉलो करती है और वहां ये सिस्टम सक्सेसफुल है, तो ये मुझे भी करना चाहिए, तो सेकंड वाला भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना. ट्रासिक, मैं बताती हूँ आपका डाउट सॉल्व करने के लिए, जो लिखा होता है ना उसको ट्रू मानते हैं. So if it is a must in developing nation and if it is true, then it's a desirable one. सेकंड वाले में कन्विंस हो गए? आंसर. सेकंड इज वीक, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग. Absolutely, Tanya. Yes, Srishti. Yes, Mahi. Yes, Muskan. The second is absolutely weak. क्योंकि यूएस में हो गया डज नॉट मीन वो इंडिया में भी हो जाएगा या किसी और कंट्री में भी हो जाएगा. वो डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है, क्या पता हमारे यहाँ वो वर्क नहीं करे. डोंट अज्यूम थिंग्स अदरवाइज नॉट मेंशन्ड. डोंट यूज योर एक्सटर्नल नॉलेज. द आंसर इज ओनली ए. Only and only A. Second is weak. Any argument, let me write another pointer for you. Any argument that compares. आपके फ्रेंड ने सीए का एग्जाम दे दिया तो मुझे भी देना चाहिए. आपके पापा बोलते तुम भी दो बेटा, तुम भी सीए बनो. एनीथिंग दैट कंपेयर्स. आपका फ्रेंड तो 5 रोटी खाता, आपकी मम्मा कहती तू 2 ही रोटी खाता है. एनीथिंग दैट कंपेयर्स विल ऑलवेज बी अ वीक आर्ग्यूमेंट. ठीक है? सो नो कंपैरिजन. सेकंड इज वीक. All right. So, now, first, don't read these. Don't. Only read this part and identify the main argument. Once you're done with this, then read the question and tell me what can be concluded. उद्देश्य बट व्हाट इज रिटन उसको हम ट्रू मानते हैं बच्चे. ओके, ट्रू मान के हम देखते हैं कि क्या वो स्ट्रांगली पुट है या वीकली पुट है. आपको आर्ग्यूमेंट की लैंग्वेज जज करनी है सिर्फ. एक्सटर्नल नॉलेज तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए जो लिखा होता है उसको हम ट्रू मानते हैं. ऐसे होंगे वॉरियर रिद्धि, ऐसे होंगे. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस.
सोच के बता। ओके, ओके सृष्टि, Titania, right? 3 1 3 1 3, okay? बेसिकली कंफ्यूजन 1 और 3 में है। तो देखो एक सिंपल बात है, जो भी कंक्लूजन निकालोगे वो पैसेज से ही निकालोगे, है ना? तो जब पैसेज कहीं भी सेक्सुअल रेवोल्यूशन की बात कर ही नहीं रहा, तो आप ये कंक्लूजन तो सर्टेनली नहीं निकाल सकते हो। फिफ्थ इज outrightly eliminated. Yes, and I have to find my answers between 1 2 3 and 4 only. Let me see what have you marked. Okay? नहीं बच्चे, 5 हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप कंक्लूजन निकालोगे ना तो कंक्लूजन इसी के डेटा में से निकलेगा। तो सेक्सुअल रेवोल्यूशन की बात हुई नहीं है, तो आप सेक्सुअल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट मी एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। सो द रियलिटी इज रेयरली एज डिलीशियस एज फैंटेसी। क्या ये ऑप्शन मैं किसी और पैराग्राफ में भी फिट कर सकती हूँ? चॉकलेट की बात कर रही हूँ, सकता है? फ्रूट्स खरीदने जा रही हूँ, बिग बास्केट में पिक्चर्स आ रही हैं, हो सकता है? हो सकता है ना? और फैंटेसी क्या है? फैंटेसी आज मैं चोको लावा केक खाने जाऊंगी, चोको लावा केक मैंने दिमाग में बना लिया है कि उसमें से इतना ओजिंग चॉकलेट होगा कि मेरा बोल फिल हो जाएगा। ये मेरी फैंटेसी, मेरी इमेजिनेशन है। रियलिटी हो सकता है उतना ओजिंग चॉकलेट नहीं हो। इसका पिक्चर्स और फूड के साथ क्या लेना देना? What does this option has to do with the paragraph? Does it even relate to my paragraph? One wrong है। One is wrong. Your fantasy is only your imagination. It doesn't link to photography. And anything that does not link to photography is out of the context of the image. One is outrightly wrong. Got that, everyone? Yes, Tanishka. The second option. Never has food been more beautiful or unattainable. आज से पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना एक्सट्रीम तो आप ऑप्शन ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। हाँ, आज बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है, बट आज से पहले होती ही नहीं थी। That's an extreme conclusion. I can't draw that. Okay? All right. And third, food photography has credited the art of delectable. Visual delights that will never taste as good as they look. They look beautiful because the pictures are beautiful, but they don't taste as great, is exactly what the whole passage states. So the answer is going to be only and only, the answer is 3. 4 says food photography has become an indispensable part of our daily life. डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए फूड फोटोग्राफी, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इंडिस्पेंसिबल पार्ट, ऐसा बोल रहा है पैसेज में। ऐसे में तो ये बोल रहा है कि आर्ट है फूड फोटोग्राफी, दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में वो उतना टेस्टी नहीं होता। आंसर इज नो, द आंसर इज 3. So Tanya, that's the point actually. But this answer can only and only be got through elimination. Since paragraph में कहीं भी ऐसा एक hint नहीं है कि वो pictures reality को match करती हैं, so मैं never को ये benefit of doubt दे सकती हूँ. Okay? Trusting you assumed it, बच्चे. You assumed something otherwise not mentioned. Okay? I have never का point समझ में, because they say पिक्चर्स कभी भी जस्टिफाई नहीं करती हैं उसके टेस्ट को। आप नेवर को वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो। ओके, ये लाइन का मतलब क्या है? ऑन द अदर हैंड, द डिस्कॉर्डेंस बिटवीन दीज फोटोज एंड द रियलिटी, इट लीव्स अस कंटिन्यूअली अनहैप्पी।
मतलब लगातार वो हमको अनहैप्पी करती है। इसका मतलब वो कभी भी उतना टेस्टी नहीं होते जितना टेस्टी उनकी पिक्चर्स दिखती हैं। अग्रीड? ट्रस्टिंग? अब आया समझ में? ओके, ऑल राइट, सो time to come to the end of the class. I hope you had fun learning. See me again tomorrow morning 10 a.m. in the Hindu editorial analysis, rather the editorial analysis, where we make reading comprehensions on editorials every day. We make critical reasoning questions on editorials every day, and I'm sure you will benefit immensely there. See you at 10. Have a very, very good day, everybody, and God bless all of you.